Welcome back. We have some breaking news coming in that we're going to be focusing on. So what we're showing you is when RRR actor Ram Charan arrived at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi after the Oscar win. Fans and supporters welcomed him at the airport. Now we're crossing over to CNN News 18's Nikhil Lakhwani, who's joining us live. Nikhil, over to you. So Aisha, just a while back, RRR famed superstar Ram Charan Teja, he has arrived at the national capital. For the first time, he has landed in the country after the win in the Oscar. Huge win, so to say. And many of the fans have also gathered here. I would urge my camera person to show you a brief view as to how many people are now seen here. In fact, a huge gathering was seen when he was coming out from the airport. In fact, his dog, Rhyme as well, he was very much with him to welcome him, in fact. And all the people who have come here, they have come here from different parts of not just the national capital but from different parts of the country. This is the craze, so to say, of Ram Charan Teja. Joining us is one of the fan. आप बताइए, आज फर्स्ट टाइम वो लैंड किए हैं. व्हाट इज द फीलिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू? आपने उनको सामने से देखा, आप ये लेकर भी आए हैं. बताइए व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो. एंड मैं उन्हें देखने के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट मैं 10 साल से वेट कर रही हूँ, बिकॉज सिंस मैं चाइल्ड थी आई एम हिज बिगेस्ट फैन. आई बिलोंग फ्रॉम आंध्रा एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दे वॉन दिस ऑस्कर, क्योंकि इट हैज़ बीन लाइक साउथ इंडिया का जो पर्सपेक्टिव होता है साउथ इंडियन फिल्म्स का, वो चेंज हो गया कम्प्लीटली. बिकॉज मी बीइंग स्टडीइंग इन नॉर्थ इंडिया, मुझे पता है कि कैसे आप नॉर्थ इंडियंस लाइक दे सी दैट फुल ऑफ एक्शन ड्रामा एंड ऑल ओनली, लाइक यू नो बहुत ओवर लगता था आप लोगों को. बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. तो 10 साल से आप उनको देखना चाह रहे थे, आपने देखा भी तो बड़ा हिस्टोरिक तरीके से, क्योंकि वो ऑस्कर्स उनके गाना जो ऑस्कर जीता है. जब आपने देखा उनकी शायद से वाइफ भी साथ में थी, डॉगी जो राइम भी साथ में था, क्या थॉट आया? क्योंकि 10 साल से आप वेट कर रहे थे उनको देखने के लिए, और उनके लिए भी खुशी का पल है जिस तरीके से वो लौटे हैं. वेरी वेरी ट्रू. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड यू नो द वे ही ट्रीटेड हिज वाइफ, इतने केयर, शी इज प्रेग्नेंट, तो इतने केयर से आई एम वेरी मच, मतलब बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग हस्बैंड है. एंड ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर. Okay, so you can see this is the craze. In fact, the fan has come here, taking this flag as well, which is of RRR. Such is the craze of the movie, such is the craze of Ram Charan Teja. I would like to, Yeah, please. I want you to say Jai RC once. Jai RC once, Jai Ram Charan. Yeah. आप ही बोल दीजिए. Jai RC. Okay, so that's what we are talking about, Aisha. This is the craze of all the fans. You can see that there is gathering here as well. Many of the people have come here with bouquet and with roses in hand as well. Let's take another view. आप कहाँ से आए हैं? तेलंगाना से. So you have come here all the way from Telangana. आप ये रेड रोजेस किसके लिए लेके आए? राम चरण के लिए. लेकिन ये तो आप दे ही नहीं पाए. Yeah, media has covered him. Media has covered. So what was his sense when you had seen him for the first time? He's as handsome as he's on the screen, and also I'm very happy. I have also seen his wife. I'm also a fan of his wife. Okay, thank you so much for speaking to CNN News 18. So such is the craze that we are continuously talking about. Aisha, this is the particular gate from where he had taken the exit. So for the very first time after winning the Oscar award for the best original song for the Natu Natu, this is the first time when he has landed in the national capital. In fact, we have been given to understand that he will participate in one or two events in the capital city. Then he will depart for Hyderabad post evening from this particular airport only. So no other meetings are scheduled as of now, but for the very first time this is the landing of him at the Delhi airport, and this is how he was received by his fans outside T3. Back to you. Absolutely. Nikhil, thank you so much for joining us and giving us that exciting coverage. We actually have a statement from Ram Charan coming in. Very happy. Thank you everybody, and we should be proud of Keerwani Sahab and Rajmouli Sahab and Chandrabose Sahab. इनके वजह से हम ये रेड कार्पेट गए थे और ऑस्कर जीत कर वापस आए थे. और इनके अलावा हमारे देश को, हमारे ऑडियंस को, हमारे फैंस को हर जगह में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट एंड वेस्ट, सबको हम सर फैंस जो RRR को देख के इतना अच्छा बड़ा हिट
किया था। आपका सॉन्ग था ये, हमारा सॉन्ग नहीं है। नाटू नाटू देश का सॉन्ग हो गया। देश की जनता ऑस्कर के पास लेके आके हमको जीतने के लिए अवकाश दिया। थैंक यू। Well, with that, we're heading into a very short break, but do stay with us.